ऑलराइट, सो आपके पास नेटवर्किंग के अंदर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक प्रॉब्लम आती है आपके पास स्केलिंग की, कि हाउ डू यू स्केल, हाउ डू वी डू राउटिंग विद बिलियंस ऑफ राउटर्स, राइट? क्योंकि हमारे पास जो फॉरवर्डिंग टेबल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर बिलियंस ऑफ एंट्रीज नहीं आ सकती। दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारे पास ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी क्या होती है कि हाउ इज़ राउटिंग डन विद इन अ नेटवर्क एंड अक्रॉस द नेटवर्क्स, ठीक है। तो अभी जब मैं नेटवर्क्स बोलूँगा या ऑटोनोमस सिस्टम्स बोलूँगा, जिनको एएसपी कहते हैं, या डोमेन्स बोलूँगा, उनका मतलब सेम है, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट नेटवर्क्स। सो आपके पास दो टाइप की नेटवर्किंग हो रही होती है। एक होती है इंट्रा एएस विच इज़ विद इन द सब नेटवर्क्स, एंड एक होती है इंटर एएस, ठीक है, विच इज़ अक्रॉस द नेटवर्क्स। सो इंट्रा एएस जो होती है, दैट मस्ट बी रन in the same intra-domain protocols. मतलब you can ignore this point. And the second thing is कि इंट्रा एएस के अंदर admin wants complete control over how its traffic is being routed, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडमिन को यहाँ पर पॉलिसी उसको ज़्यादा चाहिए होती है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन इंटर एज़ कम्पेयर टू इंट्रा, वेयर जहाँ पर आपके पास परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो यू वांट मोर कंट्रोल इन इंटर, ठीक है। नाउ जब भी आपके पास, ये मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इंटर वर्सेस इंट्रा को। सो ये आपके पास इंट्रा हो गया एंड अक्रॉस द नेटवर्क्स इंटर हो गया। जो फॉरवर्डिंग टेबल होगी उसके अंदर आपके पास एक इंट्रा होगा और एक इंटर की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। सो इंट्रा आपके पास कौन कौन सी होती है? आपके पास रिप होती है, OSPF होती है, EGIGRP होता है, ठीक है। अब रिप और EIGRP जो है वो DB है, और ये सिस्को पैकेट यूज़ करता है EIGRP। और अब OSPF जो है वो ज़्यादा बेटर वर्जन है रिप का, तो वो LS यूज़ करता है, विच इज़ लिंक स्टेट, विच इज़ ऑल्सो डाइस्ट्रस। Now OSPF जो होता है आपके पास, as we stated that it is link state, each route floods the OSPF LS ads, क्योंकि सारी चीज़ों के पास सबकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो सारी की सारी जो भी एडवर्टीजमेंट्स हैं वो फ्लड करेगा अपने ही OSPF के नेटवर्क पर, विच इज़ डायरेक्टली ओवर IP rather than using TCP and UDP. So you're using IP rather than using TCP and UDP to all the other routes in AS. It is also has security. So we will see in this diagram, जिसके अंदर हम hierarchical OSPF को डिस्कस करते हैं। अब hierarchical OSPF के अंदर हमारे पास 2 hierarchy होती है। एक होती है आपके पास बैकबोन और एक होता है आपके पास एरियाज। तो इसके अंदर हम फ्लडिंग क्या करते हैं, LS की ओनली टूवर्ड्स एन एरिया और अ बैकबोन, यानी कि जो फ्लडिंग हो रही होगी एडवर्टीजमेंट्स की कि भाई मैं तुम यहाँ जा सकते हो, या जो आपके पास जो भी आपके पास फॉरवर्डिंग टेबल होगा वो सिर्फ यहाँ पे फ्लड हो रहा होगा आपस में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी यहाँ पर फ्लड हो रहा होगा बैकबोन एरिया पे। तो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारे पास एरिया 1 की जितने भी फॉरवर्डिंग टेबल्स हैं वो एरिया 2, एरिया 3 और बैकबोन पे जा रहे होंगे, नहीं। एरिया 1 के फॉरवर्डिंग टेबल्स आपस में रहेंगे, और उसका जो आपके पास एरिया बॉर्डर का जो होगा राउटर, वो सिर्फ बताएगा इन्फॉर्मेशन समराइज़ करके पूरा टेबल के भाई इसके अंदर ये राउटर्स हैं और उसकी ये इन्फॉर्मेशन है। तो एरिया 1 का बॉर्डर जो होगा राउटर, वो समराइज इन्फॉर्मेशन देगा। सो इट्स रिटन ओवर हियर, समराइजेस डिस्टेंसेस ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ इट्स ओन एरिया, advertises in the backbone and also across the other areas. So it solves the problem of routing to other nodes of other areas, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन हुई भी है कि फ्लड जो है वो सिर्फ अपने एरिया में हो रही है, ठीक है, एंड इट सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द एरिया बॉर्डर। एंड देन बाउंड्री जो बैकबोन का जो होता है, बाउंड्री राउटर होता है, उसको हम बाउंड्री राउटर कह रहे होते हैं। जिस तरीके से एरिया के बॉर्डर्स होते हैं, इसी तरीके से बैकबोन का जो बाउंड्री होता है उसको बाउंड्री राउटर कहते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू OSPF. Now let's take a look at BGP, ठीक है। So OSPF was intra, we were talking about within a network. Now let's talk about across the network. So इंटर AS के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं BGP, ठीक है। अब इसके अंदर हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं रीचेबिलिटी, और ये जो फॉलो करता है ये पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल फॉलो करता है। सो इट्स नॉट DS, it's not link state, it is path vector. Now
It is a bit similar to both LS and DV. DV से इसलिए वो है similar है क्योंकि it is asynchronous and distributed. It also follows like CIDR networks, तो 16 and across 24 के networks पर ये send कर होता है अपने flooding के advertisements. So इसको अब देखते हैं. It also allows sub networks to advertise its existence and destination it can reach to the rest of the internet. So इसका एक बहुत famous message है कि yeah, you can imagine the way how you can understand BGP in a very easy manner is that there's a message called I am here, here is who I am, here's who I can reach and how. Okay, so I am here and I can tell you how you can reach. Sorry, let me present this with a diagram because it will be more easier. I am here and this is all of the people who I can reach and I know how to reach them as well. So that it's like this. Now BGP provides each AS, okay, it provides each network. So you will see कि जब वो दूसरे networks को क्या provide करता है, it first of all obtains the information of the network reachability from the neighbor AS, which is also EGP inter. ठीक है, obtain information ये है कि भाई मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये नेटवर्क है, ये AS1 है, AS2 है, AS3 है, सो आई शुड नो कि यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, एंड हाउ कैन आई रीच to that specific router, right? So reachability मुझे पता होनी चाहिए. So first it will obtain the information of the network reachability from the neighbor AS. So if I'm at AS2, it should know okay, how I can reach this router or this router, so it will obtain the information. This is done through EGP, which is shown over here, which is across the networks. And it will also determine the routes to the other networks based on reachability, which is based on policy. And we'll look at what is policy. And policy is going to be okay, whether whether I want to advertise my information to my neighbor AS or not, because if I will, then it will go to count to infinity problem for link cost, for variable link cost changes, and there will be instances where you will see that your policy would be that I don't want to take this path, this specific path, I want to take some other specific path. So in those cases your policy will matter, and you will understand in a little while why these policies are important. So for for within the networks you're using intra protocol, which is IBGP. Sometimes you use IBGP, sometimes you use OSPF, but usually the rule of thumb is that if you're using BGP, you use for inter, which is across the networks, you use EBGP, and within the networks you use IBGP. Now let's put this into practice. So imagine that there's a new router which joins the AS3, which is named router Y, and the way how information is going to be conveyed is going to be that your information about Y is going to be passed to the gateway AS3, and AS3 will advertise to AS2 that hey, there's a new router Y and this is how you can reach that router Y through this router reachability. And this connection between AS3 and AS2 is known as BGP session. And now BGP sessions mostly consist of two BGP routers. There's always called as peers and speakers. So peers would be this guy, which is AS2, which is like requesting information, and AS3 would be a speaker, which is like he's saying, hey, I got this information. So these are exchanging BGP messages over semi-permanent TCP connections, and they're usually using port 179. So some programming rules or some programming you can imagine, not rules but functions, is that BGP open is used for open TCP, BGP notification is used for closing, BGP update is used for advertising a new path, and BGP keep alive is using for keeping alive some connection for acknowledgement and updates. You can see in like chapter 2. Now BGP के attributes advertise करता है कैसे, जो message जा रहा होता है वो होता है क्या है, वो एक destination का prefix होता है, which is the longest prefix as you remember in chapter 4, and it's also using attributes. Now attributes comes on two forms. The first form is the list of all the AS which has to pass along
along the path, which is like if I'm sending my message from AS1 to AS3, so it will go from AS1 to AS2 and AS3. So it should have all of the list of all of those AS. And the next thing is that it should have a next hop, which would indicate a specific internal AS router to the next hop AS router. So what I mean by that is it should know that, hey, this is the specific gateway of AS1 which should be communicated to this specific router or gateway which is in AS2. So it should have the information of the next hop router of the AS and all of the AS that it would pass along. Now comes again about the part of policy based routing or routing. So the router is receiving a path. So a router which is receiving a path might accept or reject a given policy. Like I said, कि वो एक पॉलिसी एक्सेप्ट भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है कि एक पर्टिकुलर पाथ उसको फॉलो करना है नहीं करना, या फिर वो एक पॉलिसी यूज़ करेगा कि उसको वेदर ही वांट्स टू एडवर्टाइज अ पाथ to a neighbor or not, because if we will do it for dynamic routings, then it can cause count to infinity problem. Now let's take a look at why is these policies important. So let's assume कि हमारे पास IP traffic को हमें handle करना है for ISPs. Now W, X, Y are your customer networks and A, B, C are your provider networks. So these are the networks which are not actually giving money or paying money to the ISP for an IP, but they're just there. So and the customers are obviously paying the money to the ISPs. So case वन ये है कि W जो है वो अपनी information जो है वो सबसे पहले send करेगा, advertise करेगा A को. A खुशी खुशी ले लेता है. A क्या करेगा, पे advertise करेगा B और C को. Now since B and C are not paying to the ISP, then it's not necessary that B might advertise कि भाई मुझे information मिली है WAB से, वो C को नहीं बताएगा. It's not necessary कि वो बताए. ठीक है. तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास नेटवर्क का जो ट्रैफिक है सी के पास वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी इट विल लाइक उसको ऐसा लगेगा कि भाई कोई पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता बी से ए और डब्ल्यू, एंड सी को ये फोर्स करेगा कि भाई अब मेरे पास अगर जब भी इंफॉर्मेशन आएगी डब्ल्यू ए सी से तो वो सी पाथ जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन अगर उसको y को देनी है तो उसे वो y के थ्रू दे सकता है, अगर वो उसको x के थ्रू देनी है तो वो सिर्फ डायरेक्टली x के थ्रू देगा, ठीक है, b के थ्रू नहीं दे सकता. एंड सिमिलरली कि अगर इन्फॉर्मेशन वापसी पीछे प्रोपोगेट हो रही है सी ए डब्ल्यू के पास, तो उसको ये नहीं पता कि b के पास कोई आपके पास कनेक्शन है, तो वो सिर्फ c के थ्रू ही देगा इन्फॉर्मेशन. नाउ केस 2 ये है कि लेट्स अज्यूम कि हम x से स्टार्ट कर रहे हैं कनेक्शन एंड x हमारे पास ड्यूल होम नेटवर्क है. ड्यूल होम का मतलब ये होता है कि उसके पास रेफरेंस है ऑफ बोथ बी एंड सी, तो वो दोनों से कनेक्टेड है. अब x जो है नॉन नेसेसरली ये बताएगा कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके पास ड्यूल नेटवर्क है, नॉन नेसेसरली कि x बताएगा. तो इससे क्या मसला होगा, इससे मसला ये होगा कि x के पास एक इंडिपेंडेंट पाथ आ जाएगा बी ए डब्ल्यू का और x के पास एक इंडिपेंडेंट पाथ आ जाएगा सी ए डब्ल्यू का. तो आपके पास जो ट्रैफिक है वो अब डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, एंड दिस मेक्स इट अ बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज यू हैव गिवन इंडिपेंडेंट पाथ्स एंड नॉट नाउ यू आर नॉट शेयरिंग पाथ्स. सो दैट कैन ऑल्सो बी अनदर प्रॉब्लम. नाउ फॉरवर्डिंग टेबल्स को देख लेते हैं फॉर बीजीपी के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक नेटवर्क है, ठीक है, वो बहुत सारे नेटवर्क्स के थ्रू आ रहा है और आपका गेटवे जो था इस एएस का वो था आपके पास 1C था. तो ये मुझे बताएगा कि भाई मुझे अगर 1A पे पहुंचना है तो वो मैं 1C के थ्रू पहुंच रहा हूँ, यानी कि अगर इन्फॉर्मेशन यूँ प्रोपोगेट हो रही है तो वो मेरे गेटवे 1C से आ रही है इन्फॉर्मेशन एंड वो 1C से कनेक्ट होकर आपके पास इंटरफेस 1 के थ्रू आई है आपके पास इन्फॉर्मेशन. एंड सिमिलरली जब वो ये एंट्री करता है तो वो वापसी की भी एंट्री करता है कि भाई मेरे पास अगर X का पैकेट आया है X किसी और नेटवर्क से, तो X के लिए मुझे 1 के थ्रू जाना पड़ेगा. और BGP के अंदर हम एक और इंट्रा जो विद इन द नेटवर्क्स जो हम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं हॉट पोटैटो, विच इज़ लाइक यूजिंग लीस्ट कॉस्ट. सो दैट वाज इट.